While counseling students in regard to ACCA and to their parents, the most common question generally जो बच्चे जो students और उनके parents questions पूछते हैं, that is a very big question, that whether ACCA is a qualification or a degree. For example, if I do a BCom from Delhi University or Mumbai University or Kolkata University, I will get a degree. So the point is, they are a bit confused about whether they will be getting a degree or a certification. So let me assure you, this video specifically for you, my dear friends. When I say ACCA, ACCA, the full form is Association of Chartered Certified Accountants. As the name indicates, dosto, this is not a degree. This is a certification course. And even I will say, if you are going for CPA USA or ACCA or CMA USA or CFA USA, all these are certifications. हम ये चारों कोर्सेज की टीचिंग करते हैं बेटे, रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइव लेते हैं, एंड वी आर सेलिंग इन 30+ कंट्रीज, एंड वी आर गेटिंग ह्यूज कमेंट्स फ्रॉम यूट्यूब. आप हमारे यूट्यूब कमेंट्स देखें तो आपको लगेगा यार 30+ कंट्रीज में वी आर सेलिंग. And all these are certifications. These are not, these are professional certifications. These are not degrees, I will say. So this is the point which I want to clarify. These are the qualifications, certifications, and these are not, these are not the degrees. So मैंने लिखा is ACCA degree a big cross, a big cross. I have not. Now the next point which I want to tell you in regard to ACCA, that if you are doing ACCA, and you have cleared your skill level, that is 9 papers, the knowledge level as well as this skill level, without exemption. My point is without exemption. I repeat my points, without exemption. Then you can, you can also apply for BSc in applied accounts. BSc in applied accounts, that is from Oxford Brook University. जो आज मैं अभी बताने वाला हूं कि आप ऑक्सफोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी से कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद, वो क्या फॉर्मेलिटीज है उसका हमने एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर किया है. दैट व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज फॉर दैट. एक मेंटर अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर आपको थीसिस लिखनी पड़ेगी 10,000 वर्ड्स की. मई नवंबर में डिपॉजिट कर सकते हैं. दिस मच विल बी द एक्सपेंस, मैक्सिमम दैट एक्सपेंस अप टू दिस डेट जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो दैट इज मैक्सिमम अप टू INR 1 लाख, नॉट मोर देन दैट. बट द पॉइंट इज, अगर आप डायरेक्टली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रुक यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूके में जाते हैं, तो बेटे 3-4 साल जाने का खर्चा ही 1 करोड़ आ जाएगा, इंडियन रुपीज की बात करें तो. इफ you are doing a ACCA, along with that you can also, after skill level, आप इस ब्रुक यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड ब्रुक यूनिवर्सिटी से, you can apply for BSc in applied accounts and you have to fulfill some formalities. और जब आपका प्रोफेशनल लेवल क्लियर हो जाएगा, then you can apply for the MSc in applied accounts from University of London, which we have. I have prepared a separate video for that also. तो कहने का मतलब ये है कि it is not a degree, it is a certification course. You should go for it. Very beautiful course. Be happy, be jolly, be cheerful.